Welcome to Gyanpath by Dr. Meenakshi Upadhyay Tiwari. Friends, I would like to tell a Sanskrit story with translation. This story is taken from Kathanjali, written by Shanta Raman. Hope all of you would enjoy. किमस्ति पेटिकायां नीलाम्बा काचित् वृद्धा धनिका च तस्याः चत्वारः पुत्राः। सा स्वस्याः सप्ततिमे जन्मदिने स्वीयं धनं सर्वं समानतया विभज्य पुत्रेभ्यः दत्तवती। उक्तवती च पुत्राः इतः परं वर्षे 3 मासान् यावत् भवत्सु एकैकस्यापि गृहे पर्यायक्रमेण वस्यामि इति। What is in the box? Neelamba was a rich old woman. She had 4 sons. On her 70th birthday, she divided her wealth into 4 equal parts and distributed it among her sons and said to them, "Dear sons, from now on, in a year, I will stay with each of you for 3 months." बक्से में क्या है? नीलम्बा एक बहुत बूढ़ी और एक बहुत अमीर औरत थी। उसके 4 बेटे थे। जब वह 70 साल की हुई तब उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी के 4 हिस्से कर दिए और चारों बेटों में एक एक हिस्सा बांट दिया और फिर उनसे कहा कि मैं साल में सभी बच्चों के पास 3-3 महीने रहूंगी। नीलाम्बा स्वकथानुसारं पुत्रगृहाणि गच्छन्ति कानिचन वर्षाणि यापितवती। कालक्रमेण पुत्रगृहेषु तस्याः स्वागतं न्यूनं भवति स्म। यत् लक्ष्यं तु आसीत् धनार्जनेव। स्वकीयं धनं सर्वम् एतावता एव दत्तवती आसीत् सा। पुत्राणाम् एतादृशेन व्यवहारेण नितरां खिन्नः अभवत्। Neelamba spent some years staying in each of their houses in turns. After some years, the respect towards her was reduced in their houses because earning money became more important to her sons. She felt more distressed with their behavior due to the fact that she gave up all her wealth to them. इस तरह से नीलाम्बा अपने बेटों के घर समय व्यतीत करती रही। बारी बारी से कुछ साल बीतने पर उसको ये लगा कि उसकी रिस्पेक्ट कम हो गई है। उनके बच्चों का सिर्फ लक्ष्य था अपनी माताजी का धन लेना। अब वो सारा धन तो उन्हें दे ही चुकी थी। उसको बहुत ही डिस्ट्रेस फील हुआ। अब वो सोचने लगी, अब क्या करूं? एकदा अकस्मात् नीलाम्बा सखीं स्वर्णम्बा दृष्टवती। दीर्घकालं यावत् तयोः मध्ये आत्मीयः वार्तालापः प्राचलत्। नीलाम्बा सखी क्लेशान् सर्वान् उक्तवती। तत् श्रुत्वा स्वर्णाम्बा किञ्चित् कालं यावत् चिन्तयित्वा नीलाम्बायाः कर्णे किमपि उक्तवती। तेन नीलाम्बा संतुष्टा जाता। One day, Neelamba's friend Swarnamba came to visit Neelamba. Neelamba shared her distress with her friend. After hearing, Swarnamba whispered something to Neelamba. Neelamba felt very happy after listening to the idea. एक दिन क्या हुआ? नीलाम्बा की फ्रेंड स्वरम्बा आई। स्वर्णम्बा को नीलाम्बा ने अपने सारे दुख बताए तो स्वर्णम्बा ने एक आइडिया उसके कान में बताया जिसे सुनकर नीलाम्बा बहुत खुश हुई। अन्यस्मिन् दिने सायंकाले नीलाम्बा गृहात् बहिर्गता।
गतवती कुत्र गच्छतीति अनिवेद्यैव सा गतवती आसीत्। प्रत्यागमनसमये तस्याः हस्ते एका पेटिका आसीत्। तया धृतानि वस्त्राणि च मलिनानि आसन्। The next day evening, Nilamba went out without saying anything to anyone. She returned with a trunk. Her clothes were dirty and her sons asked where you were. अगले दिन क्या हुआ? नीलांबा घर से बाहर चली गई। किसी को कुछ भी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में एक ट्रंक था और उसके जो कपड़े थे बहुत गंदे थे। तो उसके बेटों ने पूछा कि माँ तुम कहाँ गई थी? हस्ते पेटिकां गृहीतवती मातरं दृष्ट्वा पुत्रः पृष्टवान् अम्ब किम् एतत् भवत्या वस्त्राणि मलिनानि। हस्ते एका पेटिका अस्ति। कुत्र लब्धा एषा पेटिका? तस्य अन्तः किम्? कुत्र गतवती आसीत् भवती इति। Seeing her mother with a trunk, son asked, Mother, what is this? Why are your clothes are dirty? Where did you find this trunk? What is in it? Where did you go? जब नीलांबा घर आई तो उसके हाथ में एक पेटी थी। उस पेटी को देखकर उसके बच्चों ने पूछा कि माँ तुम्हारे हाथ में ये क्या है? तुम्हें ये पेटी कहाँ से मिली? इसके अंदर क्या है? आप कहाँ गई थी? आपके वस्त्र इतने मैले क्यों हैं? इस तरह से उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे। वत्स एषा पेटिका भूमेः अन्तः मया निक्षिप्ता आसीत्। एतस्यां बहूनि अमूल्यवस्तूनि सन्ति। सर्वं भवताम् अभ्युदय एव, किन्तु मम मरणानन्तरमेव भवन्तः एतेषां वस्तूनाम् उपयोगं कर्तुम् अर्हन्ति इति उक्त्वा नीलांबा अन्तः गतवती। Son, I hid this trunk in our land. It contained some valuable objects. All of these things were hidden for your good only, but you can't use these things until after my death. She replied and she went inside. नीलांबा ने कहा कि यह जो पेटी है ये मैंने अपने खेत की एक जमीन के अंदर छुपा कर रख दी थी, क्योंकि इसमें बहुत सी कीमती चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ही हैं, लेकिन जब मैं मर जाऊंगी तभी ये चीज़ें आप लोग लेना। ये कहकर नीलांबा अंदर चली गई। एतदनन्तरं तु पुत्राः मातरं सम्यक् पालयति स्म। नीलांबा पुत्राणां सदाचारेण सन्तुष्टा सती सन्तोषेण कालं यापितवती। पुनः कानिचन वर्षाणि अतीतानि। एकस्मिन् दिने रात्रौ नीलांबा दिवङ्गता। नीलांबयाः अन्त्यकर्मसु साहाय्यं कर्तुं तस्याः सखी स्वर्णांबा आगता आसीत्। After this incident, all the sons took very good care of their mother. Nilamba spent her time happily. Years passed and one night Nilamba died. Swarnamba also came to help with her friend's funeral. Before she returned, she gave a key to the sons and said, Your mother wanted me to give this key to you after her death. इस घटना के बाद नीलांबा के चारों बेटे थे नीला की बहुत अच्छी केयर लेने लगे और नीलांबा के दिन बहुत अच्छे कटने लगे। बहुत सारे साल उसने बिता दिए। एक रात क्या हुआ, नीलांबा का स्वर्गवास हो गया। स्वर्णांबा अपनी फ्रेंड के लास्ट रिचुअल के लिए
पुत्रः निराशतया स्थापितः अभवत्। ते शिलाखण्डान् निष्कास्य पुनः परिशीलितवन्तः। पेटिकायाम् अमूल्यं वस्तु किमपि न आसीत्, परन्तु एका चीटिका आसीत्। चीटिकायां लिखितम् आसीत्, पुत्राः, एतत् दृष्ट्वा भवन्तः निराशया भवतीति मन्ये। एतादृशः कपटोपातः मया आचरितम् इति अहं दुःखिता अस्मि, परन्तु भवतां बोधनाय एव कृतम्। जीवने धनम् अवश्यमेव, किन्तु धनमेव जीवनं न इति। तत् कृत्वा पुत्राः लज्जिताः अभवन्। Nilamba's sons immediately went in and opened the trunk. They were surprised to find stones in the trunk, and they searched rigorously to find something precious. As they found nothing precious in it, they were disappointed. But they found a letter in which Nilamba wrote, "I expected you to be disappointed. I felt bad to cheat all of you this way, but I did this for your own good." Earning money is necessary in life, but life is not just earning money. After reading it, the sons were ashamed of themselves. नीलम्बा के बच्चों ने जल्दी जल्दी करके रूम में गए और उन्होंने ट्रंक खोला, और ट्रंक में उन्होंने क्या देखा? बहुत सारे पत्थर हैं, कोई भी कीमती पत्थर नहीं है। उन्होंने उसको दोबारा ढूंढना शुरू कर दिया कि शायद कोई कीमती पत्थर मिल जाए, कुछ हीरे मोती जैसी कोई चीज़ मिल जाए, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर उनको एक लेटर मिला, और लेटर में क्या लिखा था कि मुझे मालूम है मेरे बच्चों, तुम इस जब बॉक्स को खोलोगे तब तुम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होगे। मैंने तुम्हें चीट किया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये सब तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि अपनी लाइफ में मनी अर्न करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लाइफ सिर्फ मनी के लिए है, ये बात अच्छी नहीं। यह लेटर पढ़कर उनके बच्चों को बहुत दुख हुआ और बहुत शर्म आई। Friends, if you really like my YouTube channel Gyanpath, then please like it, subscribe it, share it and comment on it. We will meet in next video with new subject. Namaste.